Hello students, welcome to Affinity Digital. Today we will be discussing the answer and the solution of full length test number 2. So let us start with section A, question number 101. Consider the two following statements. तो हमें दो statement दिया गया है. पहला statement है, this question is from animal husbandry, that is strategies. तो पहला statement है, in spite of having more than 70 population, what happened? Okay, now continue. In spite of having more than 70% of the world livestock population, the contribution of the India and China to the world farm produce is only 25%. बहुत कम है. इंडिया एंड चाइना में काफी ज्यादा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन होता है, उसके बावजूद हमारा जो प्रोडक्शन होता है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन, वो बहुत ही कम है. इंडिया का एंड चाइना का दोनों को मिला के इट इज 25%. वाई? बिकॉज नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा गया है? द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो. दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में फॉलोइंग दिस लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन मेंशन किया गया है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट 1. सो इट जस्टिफाइज द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोगों का प्रोडक्टिविटी काफी कम है पर यूनिट, मतलब पर इंडिविजुअल, पर कैटल हो गया, कुछ भी, वो काफी कम है, जिस वजह से हम लोगों का जो परसेंटेज होता है टुवर्ड्स हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी लेस होता है. So both of the statement are true and second one explains the one. So the first option is the correct one. Okay. So the next question is, inbreeding depression in animal can be overcome by. बच्चों, inbreeding depression कब होता है? inbreeding depression तब होता है जब एक ही पेरेंट का जो प्रोजेनिस निकला है, उन प्रोजेनिस के बीच हम लोग मीटिंग करवा दें. ठीक है, दैट इज इनब्रीडिंग. तो कंटिन्यूअस मीटिंग की वजह से हमें क्या मिलेगा? जो भी खराब जीन्स है जो कि इंफीरियर क्वालिटी को इंडिकेट करता है, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा, और जो अच्छा जीन है वो जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा, सुपीरियर क्वालिटी. बट इन दिस प्रोसेस समटाइम इट मे हैपन्स कि 4 to 6 जनरेशन जाने के बाद कभी कभार जो खराब जीन है, डेलिटेरियस जीन है, वो कलेक्ट होके प्योर लाइन में आ जाए, मतलब होमोजाइगस स्टेट में आ जाए, जिससे कि क्या होगा कि इंफीरियर क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल विल बी प्रोड्यूस्ड. तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बाय मेटिंग विथ अनदर ब्रीड, बाय मेटिंग विथ एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, नॉट अनदर ब्रीड, सेम ब्रीड बट ऑफ डिफरेंट पेरेंट. अलग यहाँ पे क्या हो रहा था? सेम पेरेंट के जो प्रोजेनीज है उनमें मेट किया जा रहा था. अभी जब हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, इंफीरियर क्वालिटी जीन आ गया, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, तब हम उसको ओवरकम करने के लिए सेम ब्रीड का एक इंडिविजुअल लाएंगे, लेकिन उनका पेरेंट सेम नहीं होगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अ सिंगल आउटक्रॉस प्रोसेस. एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए a single outcross is sufficient. Okay, so 102, the first answer is the correct one. Question number 103, interspecific hybridization is the mating of. बच्चों, इंटरस्पेसिफिक का मतलब ही होता है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच मेटिंग करवाना, और ये दो अलग स्पीशीज जो होगा, ये क्या होगा? दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल एंड द प्रोडक्शन ऑफ हिन्नी, जो कि क्रॉस है, जो कि क्रॉस प्रोडक्शन है बिटवीन द हॉर्स एंड द डोंकी. तो यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड. सेम ब्रीड तो नहीं होगा बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड वन इज द टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज. यस, दिस इज द करेक्ट वन. सुपीरियर मेल एंड द सुपीरियर फीमेल ऑफ द डिफरेंट ब्रीड्स, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, ये तो इनब्रीडिंग हो गया. सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Next, which one among the following is, which one among them is the example of the competitive inhibition of an enzyme? बच्चों, competitive inhibition क्या होता है? जब एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, यूजुअली वो किसके साथ?
लॉक एंड की फॉर्म करता है, लॉक एंड की रिलेशन, इट इज विद द सबस्ट्रेट। जब इस सबस्ट्रेट के साथ कोई एक इनहिबिटर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करता है, देन इस इनहिबिटर का एक टेंडेंसी होता है ये कि वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करे फॉर व्हाट, फॉर द एक्टिव साइट। और अगर ये सक्सेसफुली यहां पे अटैच हो गया तब क्या हो जाएगा, देयर विल बी ब्लॉकेज इन द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। सो ये हमें कहां से मिल जाएगा, द फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड इज द करेक्ट वन। बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो सबस्ट्रेट, ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता है वो है सक्सिनेट, जिससे क्या होता है, फ्यूमारेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्यूमारेट प्रोड्यूस होता है। और बच्चों ये जो एंजाइम है ये अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो हमें किडनी इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इन दैट पर्टिकुलर केस एक ऐसा ड्रग दिया जाए जिसमें मेलोनिक एसिड है, तब जाके क्या हो जाएगा कि मेलोनिक एसिड जो है वो किसका जगह ले लेगा, सक्सिनेट का जगह ले लेगा, जिससे कि ये एंजाइम और काम नहीं कर पाएगा, फ्यूमारेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और हम लोगों का किडनी बच जाएगा फ्रॉम द इंजरी। ओके, सो दिस आर वेरी मच यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड। रिमेनिंग इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड। बच्चों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल है। एंड कार्बनिक एनहाइड्रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज an incorrect one, so the first option is the correct for 104. Next, which of the following is a non-protein component of an enzyme? Which of the following is a non-protein component? Very easy. Non-proteinous component को हम क्या बोलते हैं? It is known as the cofactor, whereas the proteinous component is known as apoenzyme. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कोफैक्टर। बच्चों कोफैक्टर का एग्जाम्पल होता है एक्टिवेटर, कोएंजाइम होता है, तो हमें तो तीनों मिल रहा है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, इट विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, द नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर का ही एग्जाम्पल है एक्टिवेटर, कोफैक्टर का ही एग्जाम्पल है कोएंजाइम। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Now zinc ion is an inorganic activator for enzyme. It's very easy. It is directly from NCERT, and zinc ion is the metal activator for carboxypeptidase. बच्चों कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जो एपोएंजाइम होता है वो इस मेटल आयन के साथ अगर बाइंड ना करे तो वो प्रोटियोलाइसिस नहीं कर सकता। ओके, सो जिंक आयन हेल्प्स इन इट्स एक्टिवेशन। सो 106, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Macromolecule chitin is a simple polysaccharide. No, it is not a simple polysaccharide. It is a complex polysaccharide. Sulfur containing polysaccharide. No, it is not sulfur containing. It is nitrogen containing polysaccharide. Phosphorus containing polysaccharide. That is also incorrect. So finally, we are getting our correct answer. That is nitrogen containing polysaccharide. जिसमें इसका जो मोनोमर होता है, it is known as N-acetyl glucosamine. Okay, so the chitin is considered as the second most abundant substance, or you can say organic substance in biosphere, जो रहता है फंगल सेल वॉल में, जो रहता है आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में। ठीक है, now the next question is 108. This statement about the enzyme is true. Enzyme accelerate the reaction by lowering the activation energy. Yes, it lowers the activation energy, and this is how it performs its function. Enzyme are protein whose three-dimensional form is key to their function. अगर एंजाइम थ्री डायमेंशनल ना होता, टर्शियरी स्ट्रक्चर शो ना करता, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर शो ना करता, तब उसका जो एक्टिव साइट है वो भी प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, एंजाइम डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट का जो भी एनर्जी है उसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता, उसके साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। दैट इज द जिप्स फ्री एनर्जी, जो उसे कन्वर्ट करने में मदद करेगा इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इन नेचुरल कंडीशन, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, उसको कुछ भी ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करता है।
ठीक है, वो सिर्फ उसका क्या काम होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी चाहिए होता है उसको लो डाउन कर दे। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है उसको कम कर दे या फिर उसको ऑल्टर करे। नो, इट डजंट ऑल्टर द एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, बट व्हाट इट डज इज ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लेवल चाहिए होता है उस एनर्जी लेवल को लो डाउन कर देता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट को आपस में सामने लाएगा एंड उसे बॉम्बार्डमेंट होने में मदद करेगा, ताकि कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो लोग बॉम्बार्डमेंट करके प्रोडक्ट बना पाए। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट वन। सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है? दैट ऑल ऑफ दिस 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, 108, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट one. Now question number 110, after about how many years of the formation of the earth life appeared on the planet? बच्चों पूछा गया है कि after how many years of the formation of the earth life has appeared on the planet? It is about 500 million years after the formation of the earth. अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद और 500 मिलियन ईयर्स जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा? द एज ऑफ द लाइफ। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ था आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, विच इज अबाउट 4 billion years, 4 billion years ago. अब प्रेजेंट डे से 4 बिलियन ईयर्स पहले, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इट इज 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या बोल रहा है, फ्रॉम प्रेजेंट डे बोल रहा है या फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ बोल रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 111, the similarity of the bone structure in the four limbs of many vertebrate is an example of। बच्चों क्या कहा गया है यहाँ पे कि बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है किसका? ऑफ मैनी vertebrates. Their origin is same, they are the vertebrates। ठीक है, इनका अलग अलग एडेप्टेशन की वजह से इन लोगों का जो ऊपरी जो हिस्सा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो अलग हो चुका है, लेकिन इन लोगों का जो इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे कि हैंड अगर हम लोग कंसिडर करें तो वहां पे ह्यूमेरस रहेगा, रेडियसन अलग रहेगा, कार्पल रहेगा, हो सकता है फ्यूज्ड हो किसी में, हो सकता है पूरा अलग अलग हो किसी में, मेटाकार्पल रहेगा, फेलेंजिस रहेगा। तो वो डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन, बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। और ये कब पॉसिबल होगा? जब होमोलोगस ऑर्गन। So the fourth option is the correct one. Question number 111. Moving to the next, 112. In Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by। बच्चों जब हम Punnett square करते हैं in Hardy-Weinberg principle, हम लोग gametes का P and Q बोल के alleles को represent करते हैं। The dominating one is the P and the recessive one is the Q। जब हम multiply करेंगे इसे तो हमारा जो value लिंक रहेगा वो है this is PQ, here also it will be PQ and it will be Q square। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस स्टेज जहां पे डोमिनेटिंग एलील एंड रिसेसिव एलील दोनों एक साथ है, और इसको हम क्या किससे इंडिकेट करेंगे? इट इज ट्वाइस PQ। So the second option is the correct one. Moving to the next, head of the cockroach is pear-shaped and consists of how many segments? बच्चों जो कॉकरोच का हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है और वो 6 सेगमेंट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन के मुताबिक फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द 6 सेगमेंट्स मेक्स अप द हेड ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू द कॉकरोच। तो फीमेल में 7 to 9 स्टार्नम टुगेदर मेक्स द जेनिटल पाउच, दैट इज करेक्ट। 7 स्टार्नम जो है काफी ब्रॉड है, जिसके ऊपर उठ जाता है 8 वाला एंड 9th वाला स्टार्नम, और 7, 8 and 9 टुगेदर मेक्स देयर रिप्रोडक्टिव साइट, रिप्रोडक्टिव जो इन लोगों का चैम्बर होता है, दैट इज नोन एज जेनिटल पाउच। मूविंग टू द नेक्स्ट, द 10th abdominal segment in both the sexes bears a pair of anal cerci, that is also correct। मेल और फीमेल के 10th वाले सेगमेंट में there
occurs or there develops a sensitive structure जिसे हम क्या कहते हैं, that is anal cerci. मेल में additional structure develop होता है, वो भी 9 sternum से, that is known as what? That is known as anal style. Next is third one, a ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut. ये वाला हो गया incorrect, क्योंकि gastric ceca जो है वो foregut and midgut के बीच रहता है. So this is the incorrect statement. Moving to the next, hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth. बच्चों hypopharynx जो है इनमें टंग के जैसा काम करता है, तो हमारे जितने भी ऑप्शन है उनमें कौन सा incorrect है? That is the third one. Okay. Now question number 114. The third option is the correct one. Dense irregular connective tissue is present in. It is a direct question. From connective tissue, it is present in the skin. हम लोगों का जो स्किन का टाइटनिंग है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जिसमें कोलाजन फाइबर्स काफी ज्यादा रहता है, बट वो स्कैटर्ड रहता है. इट इज अरेंज्ड इनडिफरेंटली, द ओरिएंटेशन इज इनडिफरेंट. नॉर्मली पैरेलल वेज में करेक्ट रहता है, बट हियर इट इज स्कैटर्ड. ओके, नाउ द मोस्ट abundant and widely distributed tissue in the bodies of the complex animal is what? मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा होता है? दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. वो हो सकता है बोन के फॉर्म में वो हो सकता है कार्टिलेज के फॉर्म में वो हो सकता है ब्लड के फॉर्म में हो. सबसे अबांडेंट होता है इन आवर बॉडी. Which type of animal tissue changes in diameter, changes the diameter of the blood vessel? बच्चों, diameter of the blood vessel कौन चेंज कर सकता है? The property, the tissue which has the property of contraction and relaxation. ठीक है, और ये किस चीज का प्रॉपर्टी है? कौन से टिश्यू का? मस्कुलर टिश्यू का. तो epithelium is not responsible for changing the diameter, not the connective tissue. Yes, it is the muscle and even not the neural. So muscle का relaxation and contraction property की वजह से ये मसल जो कि ब्लड वेसल में भी होता है, उन लोगों का डायमीटर चेंज कर सकता है. एंड ये डायमीटर चेंज होने से क्या रेगुलेट होगा? प्रेशर रेगुलेट होगा, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? लेट अस सी. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां पे होता है? बैक्टीरिया में होता है. तो दिस इज एन आर्थ्रोबैक्टर, बैक्टर दिया हुआ है, दैट इज एन करेक्ट ऑप्शन. Escherichia coli, that is also a bacteria. Then is Entamoeba histolytica. This is the incorrect one. इससे restriction enzyme extract नहीं किया जाएगा. And Haemophilus influenzae is also a correct option. So 118, क्योंकि Entamoeba histolytica बैक्टीरिया नहीं है, तो इनमें हमें restriction endonuclease भी नहीं मिलेगा. Okay? Now the next question is identify the wrong statement with respect to the restriction enzyme. So enzyme, restriction enzyme, more than 230 restriction enzyme have been isolated from 900 strain of bacteria. पूरा उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे होगा 900 restriction enzyme and यहाँ पे होगा 230 strain. So first option is only the incorrect one. The DNA sequence recognized by the restriction endonuclease is called palindromic nucleotide sequence. Correct है. Heme 2 was isolated from Haemophilus influenzae RD. That is also correct. It was the first restriction enzyme that has been isolated. Restriction enzyme protect bacteria from bacteriophage. That is also correct. So which one is the wrong statement? The first option is the incorrect one. The enzyme used to combine two different fragments of the DNA. Very easy from biotechnology. It is the DNA ligase that helps in combining the two fragments of the DNA. वो recombinant DNA प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन किया जाता है विद द वेक्टर DNA. Okay? The DNA ligase is also known as, okay, now DNA ligase is also known as molecular glue. That is also an correct option. तो हमारा जो correct option होगा, finally we are getting both 1 and 2. Okay, so the fourth option is the correct one. Which of the following is an incorrect statement? फिर से incorrect statement. बच्चों ये incorrect correct
ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया है तुम लोगों का, सो दैट तुम लोग और ज़्यादा इसको पढ़ो, ठीक है। सो द टर्म केमिकल नाइफ इज यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, करेक्ट। केमिकल नाइफ कहा जा सकता है बिकॉज वी कॉल इट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर. These are commonly used names. Okay. In case of eco R1, R represent the genus. No, R doesn't represent the genus. It represents the strain of the bacteria. Okay. The linking of the antibiotic resistant gene with the plasmic vector become possible with the enzyme ligase. That is also an correct statement. The substrate for the restriction endonuclease is double-stranded DNA. That is also a true. So, which option is the incorrect one? That is the second option is the incorrect statement. Now, देखते हैं question number 122. If the desired gene segment is inserted in cell 1 site in PBR 322, the resulting plasmid will confer resistance to. तो हम लोग देख लेते हैं PBR 322 में क्या देखते हैं, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है और इस साइड में होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज PST1 एंड PVU1, जबकि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस जीन है, रेजिस्टेंट बोल रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो कौन सा है? दैट इज द BAMH1 एंड अनदर वन इज सेल 1. तो अगर सेल 1 काम कर रहा है तो वो किसको कट करेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को. तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एक्टिव नहीं रहेगा. तो अब जो ये PBR 322 है वो किसके अगेंस्ट अभी भी काम कर सकता है? एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है. सो इट विल प्रोवाइड, कन्फर मतलब प्रोवाइड करना, कन्फर रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, okay, which is an antibiotic. In Bacillus thuringiensis, the bacteria itself is not killed by the toxic protein crystal because option 1, not produced by the bacteria, just produced by the bacteria, Bacillus thuringiensis, resistant to toxin, ये itself is the toxin crystal protein, present in inactive state in bacteria. Yes, this is the correct one. Okay, ये inactive state में रहता है, जब insect उसे ingest करेगा तभी वो जाके activate होगा. Okay, so the third option is the correct one. Question number 124. The RNA interference technique is used successfully to control the nematode. तो RNA interference किस चीज को कंट्रोल करने में मदद किया था? नेमाटोड को. And which nematode? That is Meloidic RNA incognitia. Transgenic Brassica nepus is used for the synthesis of. This is out of NCERT. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि NCERT के बाहर से है, तो कोशिश करना कि तुम लोगों का नोट्स में डेफिनेटली ये दिया गया है, तो कोशिश करना इसको आंसर करने के लिए. सो इट एक्चुअली सिंथेसाइजेस हिरुडिन व्हिच इज एन एंटीकोआगुलेंट. हिरुडिनेरिया का जीन को लाइगेट किया गया विद द जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, दैट इज TI प्लास्मिड, और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को अभी अलाउ किया गया टू इन्फेक्ट द ब्रेसिका नेपस. As a result, the seeds that are collected from the Brassica nepus, उससे क्या extract किया गया? That is hirudin, which is an anticoagulant and is used in medical field. Moving to the next question. GEAC stands for Genetic Engineering Approval Committee. Where is the Analytical Genetic Engineering Approval Committee? So the second option is the correct one. So question number 107. बच्चों, ये डायग्राम जो है ये NCERT का डायग्राम है. ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो डायग्राम दिया गया है वो इतना क्लियर ना हो, बट NCERT में अगर वो डायग्राम है तो तुम लोग कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू NCERT तुम्हें सिर्फ उसे प्लेस कर जाना है, ठीक है. तो डायग्राम ऑफ NCERT शुड बी बाय हार्ट, तुम लोगों को बाय हार्ट करना है उसे, ठीक है. सो यहां पे हो जाएगा सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, या फिर डायरेक्टली कोरोना रेडियाटा प्लेस कर देना. ये वाला हो जाएगा
the zona pellucida, and this one will be the perivitellin space. So A हो गया corona radiata. Let me search. A is corona radiata, B will be zona pellucida, C will be perivitellin space. So 127, the fourth option is the correct one. 128, which of the following form the outer wall of the blastocyst? बच्चों blastocyst का जो outer wall है उसको हम कहते हैं trophoblast. तो चलो देखते हैं. So zona pellucida, corona radiata, then is the trophoblast and is the inner cell mass. So zona pellucida nahi, that is the trophoblast. With the help of the trophoblast, the blastocyst implants in the uterine wall. Next is, which of the following embryonic state attaches to the endometrial lining of the uterus for further development? तो अभी भी मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट इसके स्टिकी ट्रोफोब्लास्ट की मदद से एंड फेगोसाइटिक ट्रोफोब्लास्ट की मदद से स्टिक करता है टू द यूटेराइन वॉल. ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ब्लास्टोसिस्ट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ implantation. Okay, then is what happens during the fertilization in human after many sperm reach close to the ovum? बच्चों पहले तुम लोगों को समझा देती हूँ. जब many sperm, पहले अगर एक sperm अंदर चला गया, then it will bring certain changes in zona pellucida that will block the polyspermy. ठीक है, तो कुछ zona pellucida में changes आ जाएगा जिस वजह से polyspermy at least possible नहीं होगा. So only 2 sperm nearest to the ovum will penetrate. 2 sperm नहीं होता है. Cells of corona radiata trap all the sperm. Corona radiata कोई सेल को ट्रैप नहीं करता है. Secretion of the acrosome help one sperm to enter into the cytoplasm of the ovum through zona pellucida, and all sperm except the one nearest to the ovum lost their tail. So this is the correct one. एक्रोजोमल सिक्रीशन की वजह से जो स्पर्म सबसे नियरेस्ट होता है, पहला स्पर्म जो इसके जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ चुका है, वो एक्रोजोमल लाइसिन की मदद से, स्पर्म लाइसिन कहा जाता है, उस एक्रोजोमल एंजाइम की वजह से वो पेनिट्रेट कर जाता है जोना पेलुसिडा और फाइनली एंटर करता है साइटोप्लाज्म को. इस वाले स्पर्म लाइसिन को कहा जाता है जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. ओके, moving to the next question, number 131. In human female, the blastocyst is, the human female, let us check, gets implanted into the uterus 4 days after ovulation. That is not possible. 4 days में implantation नहीं होता है. implantation होने को 7 दिन चाहिए होता है. Forms placenta even before implantation. That is totally incorrect. Gets implanted in the endometrium by the trophoblast. That is a true statement. Get nutrition from the yolk present in the within the embryo. बच्चों human egg में yolk present नहीं रहता है. Human egg is a lecithin in nature. Okay, so the third option for 131 is the correct one. Mark the wrong statement with respect to contraception. Let us check. In withdrawal or coitus interruptus method, insemination is avoided. That is a fact. विड्रॉल मेथड में कोइटस के बाद जब इजैक्यूलेशन की बारी आती है तब पीनस को हटा दिया जाता है. सो विड्रॉल मेथड में इंसेमिनेशन अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज मदर फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज ऑब्जर्व्ड लास्टिंग अप टू 6 मंथ. दैट इज ऑल्सो ट्रू. 6 मंथ तक इंटेंस लैक्टेशनल फेज होता है. ठीक है, जिस समय FSH एंड LH सिक्रीट नहीं होता है, तो उस दौरान मेंस्ट्रुएशन भी पॉसिबल नहीं है. एंड सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एमेनोरिया. ओके, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लेस ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. बच्चों ये जो दिन है इसे कहा जाता है फर्टाइल पीरियड इन द लाइफ ऑफ इन द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, इट इज द फर्टाइल फेज. तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ना कि कम. तो यहाँ पे लिखा गया है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लेस. दैट इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें तो यही पूछा गया है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो.
है ना. यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर्स फ्रॉम STI एंड AIDS. दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. Choose the correct option from the following. Chances of failure through natural method are very low. No, it will be very high. Barrier methods are available for both male and female. Yes, male condom, female condoms are available. Other than this, diaphragm, cervical cap, vaults are available for female. So this statement is also correct. Nirod is a popular brand of female condom. It is a popular brand of male condom. Barrier contraceptives are generally made of copper due to its spermicidal effect. That is also an incorrect statement. So finally, we are getting the correct one. That is, the barrier methods are available for male and female. Which cell do not act as a target cell of HIV infection in human body? Macrophage is the factory of HIV. So ये target है, ये target cell. B cell then is helper T cell and then is both 1 and 3. जो helper T cell and macrophage दोनों ही टारगेट सेल होते हैं, बट B सेल को टारगेट नहीं करते. तो B सेल हमें क्यों नहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? जो B सेल जो है उसे एक्टिवेशन के लिए T सेल की मदद चाहिए होता है, इसीलिए B सेल एक्टिविटी नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द HIV. ठीक है. सो द B सेल इज नॉट टारगेटेड बाय द HIV virus. So the second option is the correct one. A triploblastic unsegmented animal with complete alimentary canal could be. Triploblastic होना चाहिए, unsegmented होना चाहिए animal with complete alimentary canal. Roundworm, yes, this is correct. Planaria में नहीं होता है, Planaria is platyhelminthes, इनका incomplete digestive system होता है. Liver fluke incomplete, Dihydra may be incomplete. So the correct option is the roundworm, SK helminthes. तो अभी हम पहुंच गए सेक्शन बी में, जिसमें तुम्हें 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से 10 क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना पड़ेगा. Which of the following is incorrect with respect to digestive juice secreted by the pancreas? Pancreas contain inactive enzymes like trypsinogen, correct, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. This is a correct statement. ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया. पहले जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना, तुम हाईलाइट कर देना कौन क्या बोला है, करेक्ट बोला है, रॉन्ग बोला है, ट्रू बोला है, अंडरलाइन कर देना. ठीक है. Chymotrypsinogen is activated by the enzyme enterokinase. Secreted no, enterokinase नहीं होगा, trypsin होगा. So this is incorrect. The pancreatic juice is released into duodenum through hepatopancreatic duct. That is correct. The enzyme lipase and nucleases are also present in the pancreatic juice. That is also a correct statement. So the second statement is the incorrect one. Which of the following secondary metabolite is an anti-cancer drug? बच्चों, anti-cancer drug is vinblastine and vincristine, which is extracted from Catharanthus roseus. So the first option is our correct option. Now question number 138. Enzyme catalyzing rearrangement of atomic grouping without altering molecular weight or number of the atoms. मतलब वो आइसोमरेज की बात कर रहा है जहां पे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है. सो इट इज द सेकंड एंजाइम, सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम, दैट इज आइसोमरेज. जब हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे वो कितना नंबर में आ जाएगा, विच नंबर? इट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज इज द फर्स्ट क्लास एंजाइम, सेकंड इज ट्रांसफरेज, थर्ड इज hydrolase, fourth is lyase, fifth is isomerase, and the sixth is ligase. So it is class number 5 enzyme according to IUB. The allergic disease in which the patient experiences difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of the bronchi and bronchiole. That is also mentioned in your NCERT. Wheezing occurs during the case of asthma, which is an allergic condition. So the third option is the correct one. Dash are called as the polymorphonuclear leukocytes. बच्चों, न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट कहा जाता है क्योंकि इन लोगों का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, जिस वजह से उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट.
site. So it is neutrophil. The second option is the correct one. Question number 141. Patient with blood group B can receive blood from the donor of blood group. B can receive blood from B. B can receive blood from O. So the correct option will be B and O. The role of the enzyme thrombokinase. Okay, thrombokinase is an enzyme complex. Is used for the conversion of fibrinogen into fibrin? No. It converts prothrombin into thrombin. That is correct. Formation of the urea into liver, cellular respiration में मदद करता है? नहीं. The second option is the correct one. Kidney secretes a hormone dash to promote the synthesis of erythrocytes, that is erythropoietin, which is secreted by the JG cell of the kidney. It is the question of chemical interaction or the chemical messenger, that is the endocrine system. Chemical coordination. Huh? Okay. Question number 144. Animals that get mostly affected by the change in the environmental temperature are. Bachcho, there are two types regarding the temperature. Okay, there are two types of organism we have mentioned in animal kingdom. One is homeothermic, जिनका body temperature हमेशा constant रहता है. Another one is cold-blooded, that is known as poikilothermic. उनका body का temperature according to the external temperature change होता रहता है. तो अगर external temperature change होगा, वो उनके अंदर का temperature को influence करेगा. So वो affect भी करेगा उससे. So the third option, that is the poikilothermic animals, are the correct one. याद रखना, अगर तुम लोगों को यहाँ पे cold blooded दिया जाए, उसको tick mark नहीं करना है, because same thing, poikilothermic are cold blooded, but they are talking about the temperature. और जब temperature है, तब तुम्हें कौन सा word को ज़्यादा emphasis देना है, that is thermic word को, ठीक है? Which of the following hormone is responsible for facultative reabsorption of the water from the distal part of the nephron? मतलब DCT की बात कर रहा है. Facultative, not always, it is not mandatory. और water का reabsorption कौन करता है? Water का reabsorption करता है antidiuretic hormone, which is known as vasopressin. Renin-angiotensin mechanism secretes which of the following hormone? बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को हम लोग रास मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, which stands for renin angiotensin aldosterone system. The aldosterone is a mineralocorticoid. रेनिन की वजह से aldosterone secrete होता है. So which option is the correct one? That is the mineralocorticoid. In which of the following organ worn out WRBC degrade to form bile pigment like bilirubin and biliverdin? तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन किससे सिक्रीट होता है? कहां पे रहता है? बाइल में रहता है. बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज लीवर. क्वेश्चन नंबर 148. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मेम्ब्रेनस labyrinth is surrounded by perilin. Yes, this is correct. Scala vestibuli ends at oval window while scala tympani terminates at round window. That is also correct. ये इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड काइनोसिलिया arises from the apical part of each hair cell of organ of Corti. It is never काइनोसिलिया, it is always stereocilia, non motile है. ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Each semicircular canals lies in a different plane at right angle to each other. That is also a correct one. So the third option is the incorrect one. Which of the following statement is incorrect with respect to vestibular apparatus? So vestibular apparatus helps our body to balance. So let us check. First option, the inner ear contains a complex system called vestibular apparatus located above the cochlea. Correct statement. The vestibular apparatus comprises of three semicircular canal and an otolith organ consisting of auricle and saccule. That is also true. The base of each semicircular canal is solenes, is called macula. Macula is incorrect. It is known as ampulla. Correct statement. This is the incorrect statement. The crista and the macula receptor are for the maintenance of the balance of the body. That is also a true statement. Okay. So according to 149, the third option is the incorrect one. Question number 150.
dash vision and this vision are the function of cones, while third vision is the function of rod. तो rod का vision है, that is the the scotopic vision, जबकि cone का function है photopic and colored vision. तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएगा? That is the fourth option, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट में photopic, that is true. Second में color, that is also true. And last में scotopic vision, that is also a fact. Okay, the fourth option is the correct one. So with this, we have completed our solution lecture. So let us stop here and take care and bye-bye.